Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome everybody. I am Dr. Amjad Ali and today I am going to deliver lecture number 14 for course of Advances in Human Resource Development and Management. Before proceeding further, let me give you a brief overview of the last lecture. In lecture 13, we have discussed what is a variable pay. Here we have said that it is a pay that is linked to the performance of individuals or performance of group, or it may be linked to another organizational measure of performance, whereby their portion of their salary or their total compensation is linked with their performance, and this is predetermined. The formula or the measure is predetermined, so they can actually manage their total salary or total package. Well, we have discussed what are the assumptions of a variable pay system. Here we said that teams and individuals differ in terms of how much they contribute towards organization, and we are also concerned in this way that how much in terms of what they contribute and how well they contribute for the achievement of organizational objectives. Here then we discuss assumptions of variable pay system. Here we said that teams and individuals differ in terms of how much they contribute towards the performance of an organization. Here we are concerned about that how much or what they do contribute and how well they contribute towards the achievement of organizational objectives. Then we have discussed that what are the different types of variable pay. Here we have discussed that variable pay can be determined on the basis of their individual performance, on the basis of group or team performance, or it may be linked to certain organizational measures where the performance where variable pay would be determined on organizational level. Then we have also discussed what are the factors that affect a variable pay plan, that how the success of a variable pay plan is ensured. Here we said that there should be a close link between the variable pay plan and objectives of an organization. So the direction that your organization has set as its objective, corporate objective or strategic objective, should be linked to the performance that these variable pay plans have targeted. Then regarding this factors affecting variable pay plan, we also discussed that the objectives or performance measure that you identify as base for variable pay should be able to produce the desired behavior. So whatsoever you have actually targeted, it may be output, it may be quality of product, it may be customer satisfaction, whatsoever it is. So this plan, this actually variable pay plan, is able to produce desired behavior among employees. Well, we have also discussed that third factor that affects the success of a variable pay plan is the administration of the plan. So first of all, we should be designing a plan that is not too much complex. It should not be too much easy. It should be a plan that is easy to make the people understand. So we are required to design a system that is easy or that is workable, pay plan system that is workable and that can be easily communicated in its fullest sense. So a program would be successful when we would have it linked the objective of organization with the individual incentives or group incentives or organizational measures, and the pay plan, variable pay plan, is able to produce the desired behavior. Finally, we are to administer the process, administer the pay plan. Then in the previous lecture we have discussed individual incentives, and in current lecture number 14, we would be discussing group incentives and organization wide incentives. Regarding individual incentives, we have discussed in that lecture piece rate systems,
bonuses and special incentive programs. Piece rate system में क्या होता है कि the variable pay is actually calculated on the basis of number of units that person has produced or sold or inspected or whatsoever he has done. So piece rate में एक रेट डिटरमिन करके जी पर प्रोडक्ट हमारा क्या है कंपनसेशन 10 रुपीज है, तो आपने कितनी प्रोडक्ट बेची है, 100 प्रोडक्ट बेची, सो योर वेरिएबल कंपनसेशन वुड बी 1000 रुपीज. दिस इज पीस रेट सिस्टम. इसमें एक स्ट्रेट रेट होता है, एक ग्रेजुएटेड रेट होता है. तो उस ग्रेजुएटेड रेट में थोड़ा सा उसको ज्यादा है. फॉर फर्स्ट फ्यू प्रोडक्ट्स ही वुड बी रिसीविंग 100 रुपीज. फॉर नेक्स्ट after 100 units of products sold, so next के लिए उसको हो सकता है 120 रुपीज के हिसाब से compensation मिले. So if a person has produced 150 products or sold 150 products, so first 100 के लिए 100 के हिसाब से 10 के हिसाब से 1000 रुपीज बनेंगे, और नेक्स्ट उसने जो 50 प्रोडक्ट्स बेची हैं वो 15 के हिसाब से 750. सो उसकी टोटल कंपनसेशन क्या होगी 1750. Then as the bonuses are one-time lump sum payments made to employees. These may be linked towards their contribution to creativity, their contribution towards cost reduction, contribution towards higher level of customer satisfaction. Well, bonuses, piece rates, difference between piece rate system and bonuses is that piece rate system is actually made contingent for lower level of workers. जो लेबर्स हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, जो असेंबली लाइन पे वर्क कर रहे हैं, जो सेल्स में अपने डायरेक्ट मार्केट में सेल्स कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन पे हैं, जो पे रोल क्लर्क हैं, डाटा एंट्री है जो कर रहे हैं, उनके लिए आप कर सकते हैं पीस रेट सिस्टम, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू डिटरमिन देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. काउंट करना आसान है. बोनसेस आर डिटरमिन्ड आर मेड कंटीजेंट एट सम हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. हियर वी कैन एक्चुअली असेस देयर level of efforts in terms of contributing new ideas, in terms of managing products and brands, or in terms of achieving a set standard. So bonus is a one-time payment that is fixed, that is predetermined, and it may be actually it may be given at any level, at worker level, at managerial level, or it may be given at executive level. Well, the third type of individual incentive is special incentive program. Here we may administer certain special incentives, certain recognition programs. Here we may give certain service awards. Recognition program में ये usually service industries में होते हैं, hotels, restaurant, fuel stations. उसमें हम देखते हैं best employee, best salesperson of the month, best salesperson of the week. So these are to recognize their individual efforts by giving them special incentives. So it may be simply recognition that is actually done in a certain ceremony, in a ceremonial form. And we may also see under the special incentive program certain service awards that are made that are given to people for the performance of their service to a given organization over an extended period of time. Well, it is claimed that it actually acknowledges performance. Well, it doesn't acknowledge performance. Usually it is acknowledging their service. ये service को acknowledge करने के लिए दिए. Then ये इंडिविजुअल इंसेंटिव्स हमने डिस्कस किए. फिर इंडिविजुअल इंसेंटिव्स की जो स्पेशल एप्लीकेशन है दैट इज इन सेल्स डिपार्टमेंट. सो सेल्स is very much important for all of the organization, but it's very much important for within Pakistan context for consumer goods industries and pharmaceutical industries. So we have discussed this individual incentive with respect to sales compensation and incentives. So here we have discussed what are the different performance measures that usually organizations use or employ, and what are the different options for the sales compensation. इसके different plans कौन से हैं. तो sales performance measures में हमने देखा उसके sales ratio towards overall sales ratio in comparison to other sales people, achievement of sales quota, sales made to new customers, sales made for new products. So these may be different
performance measures that we can use in order to assess individual performance, to calculate their variable pay. Then we discuss what may be the different options to have this variable pay. तो उसमें variable pay plans कितने हो सकते हैं, individual incentives कितने different types के हो सकते हैं. एक में हमने कहा सिर्फ salary only. Here employees would be receiving only salaries, no bonus. So this may be given to new employees who have no skill how to sell products. So they may be required in order to control their fears or in order to reduce their anxieties, we may offer them a straight salary plan only for a fixed number of months. So it may be given for 6 months, usually for probation period, or it may be given for an extended period of time over 1 year. So for this limited time period, they would be receiving on fixed salary. For example, we can say that a person who has been employed by a showroom to sell automobiles, so he has no experience to how to make sales or certain other premium or luxury products, so he won't be able to sell even a single product within a month. So he may be given a salary only plan. तो उसमें उसके training period में उसको सिर्फ salary मिलेगी. If we may say that it's fixed 20,000, तो सिर्फ salary मिलेगी और additional product sell करता है, so it's well. अच्छा, दूसरा उसमें हम कहते हैं सेल्स प्लस बोनस, सैलरी प्लस बोनस. तो उसमें उसकी सैलरी है फिक्स, प्लस ऑन द अचीवमेंट ऑफ सर्टन गिवन टारगेट्स ही वुड बी रिसीविंग बोनस, फिक्स बोनस. इट मे बी 20,000 सैलरी प्लस बोनस मे बी 10,000, मे बी 20,000 और इट मे बी इवन 50,000. तो फिक्स बोनस. एक हो सकता है सैलरी प्लस कमीशन. तो इसमें फिक्स सैलरी 20,000 plus commission, you would be receiving 5,000 commission on selling each car within a month. तो उसमें जितनी ज़्यादा cars बेचेगा, so in a given month if he is able to sell 10 cars, 10 multiplied by 5, 50 plus salary 20,000, so it makes 70,000 for that month. Then there may be a certain plan, fourth plan, salary plus draw. So if there is a very tough market and we see organizations see that employers or salesperson won't be able to make even a single sales within a given time period, so how they would be actually supporting their lives. So they can go for draw. Draw means that they can actually claim for certain compensation for certain money that is to be adjusted from their future commissions. तो ड्रा रीपेबल भी होते हैं, इट मे बी एग्जेम्प्टेड. अच्छा, फिफ्थ प्लान, फाइनल प्लान वाज सिंपल कमीशन ओनली प्लान. हियर देयर इज नो सैलरी एंड एम्प्लॉयर्स वुड बी रिसीविंग only commission. So this type of plan, only commission plan, are usually given to the people who are going to sell very inexpensive products. पिज्ज़ा के कार्ड सेल करने हैं, इस तरह मेंबरशिप, पिज़्ज़ा क्लब की मेंबरशिप सेल करनी है, आपने क्रेडिट कार्ड सेल करने हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आने. सो इस तरह की चीज़ों के लिए सिर्फ कमीशन ओनली प्लान होता है. सो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू सेल विद इन अ गिवन मंथ, यू आर टू रिसीव योर कमीशन ओनली. और ये दूसरी छोटी छोटी आइटम, जूस बेचना, इस तरह की चीज़ें, इसके लिए भी कमीशन ओनली प्लान चलता है. देन एट द एंड वी हैव डिस्कस एडवांटेजेस एंड disadvantages of individual incentive plans. Here advantages that these plans would promote cooperation, would promote competitiveness, would promote desired behavior, and would be leading the organization to achieve its objectives. Or disadvantages में क्या है? It may promote unhealthy competition. Well, now we are to start our lecture number 14. So here are the contents of lecture 14. So the learning objectives for this lecture. We are to discuss why organization should administer team or group incentives. So here team incentive or group incentive would be used interchangeably. Usually there is no difference from the perspective of team or group incentives. So then we would be defining group or team incentives. Then we will be discussing how to distribute these team incentives.
We would also be discussing what are the problems with team-based incentives. Then we would be discussing types of group incentives. Then we are to discuss organization incentives, and at the end we would be discussing executive compensation. So starting with why team incentives, because here we see that organizations are no more dependent upon individual performance, rather they are going to use teams in order to achieve objectives and to be competitive within the environment, within the competition, within the market. Well, in certain organizations, cooperation within and between teams is needed. Cooperation क्या है? चाहिए. The work is interdependent. Work क्या है? Independent नहीं है, interdependent work. So certain organizations are usually their function revolve around teams. So advertising agencies, creative advertising agencies, teams में काम होता है. Product development department, वहाँ पे टीम में काम होता है. इसी तरह कुछ कंसल्टेंसी एजेंसी है या ऑडिट फर्म है, उसमें टीम में काम. सो देयर आर सर्टेन एजेंसीज दैट usually perform their work revolves around groups, around teams. Well, these team-based job designs promote innovation. Why we are going for this team-based job designs? Because it promotes innovation, it promotes flexibility. Team-based organization structure encourage team members to learn new skills and assume broader responsibility. So team-based जो environment उसमें क्या, employees would be learning new skills, and here they would be assuming a broader responsibility. Now organization can enjoy the benefit of flexibility by placing individuals in different teams. Well, these individual incentives, if organization has developed certain individual incentives, may limit team incentives. So, may limit team effectiveness. So, companies are actually forced to change individual-based compensation to team-based compensation. So, these are the reasons, rationale, that why organizations are required to go team-based or group-based incentives. So, what are these group or team incentives? क्या है? Here a group of employees is, first of all, let me give you the difference between a group and a team. A group of employees is not necessarily a team, but either one can be the basis for variable compensation. Variable compensation में हम groups भी use कर सकते हैं और teams भी use कर सकते हो. Difference between groups and teams that groups are simple collection of people who are working within an office or department. ठीक है, तो सेल्स जो डिपार्टमेंट है उसमें जो सेल्स पीपल हैं, दे मे फॉर्म अ ग्रुप. ईच इज वर्किंग ऑन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल एरिया है, उसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं, उसके इंडिविजुअल रूट्स हैं. दे आर नो मोर इंटरडिपेंडेंट. टीम्स में क्या इंटरडिपेंडेंस होती है? टीम इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर हु आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव सम कॉमन गोल. तो ग्रुप में कॉमन गोल की शर्त नहीं है. यहाँ पे क्या है? दे टीम्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर a common cause, common purpose, and here there is no concrete job description. हो सकता है वो एक दूसरे के roles alternate perform कर रहे हो. And responsibility for achieving the objectives or failing to achieve objectives would lie on all the team members. ग्रुप में ऐसा नहीं है, ग्रुप में जो सेल कर रहा है वो ठीक है, जो सेल नहीं कर रहा वो ठीक नहीं है. इस तरह all the people who are in shipping department, quality control department, packing department में ये आपस में काम कर रहे हैं, मिलके एक जगह पे काम करते हैं, but their work is not interdependent, their work is independent. So group incentives may be based upon this team or groups. अच्छा, group incentive program reward employees for their collective rather than individual performance. तो जब एक shipping department या inventory management department या sales department कहा जाता है, if you achieve this level of performance, sales department की over departmental performance अगर ज़्यादा होती है, so you would be given certain reward. So it is actually going to encourage their team efforts. ठीक है ना? Group efforts at a higher level के efforts हम उसमें से हमने प्रोड्यूस करनी है. वेल दीज टीम बेस्ड इंसेंटिव्स दे आर मोर इफेक्टिव. कौन सी कंडीशन में इफेक्टिव? व्हेन ऑल ग्रुप मेंबर्स हैव सम इम्पैक्ट ऑन अचीविंग द गोल. सब में क्या है? उसकी कंट्रीब्यूशन है. ये नहीं हम कह सकते इसका काम कम इम्पोर्टेंट, इसका काम ज्यादा. ऑल
group members have some impact, and we cannot determine that to how much extent this person has contributed to the success of the project, how much extent this person contributed, और किसका कितना इम्पोर्टेंट, हम ये नहीं कर सकते, हम उसमें रैंकिंग नहीं कर सकते, हम उसमें रेटिंग नहीं कर सकते. Simple, each and every person is important. So in such situation, these group incentives, the team incentives would be effective. These would be effective where group size is small. स्मॉल साइज ग्रुप हो उसमें तो फैक्ट, लेकिन अगर आपने कह दिया कि जी ये पूरा रिटेल आउटलेट है, जैसे बड़े स्टोर, मेगा स्टोर्स, हाइपर स्टोर्स होते हैं, आपने इस्लामाबाद या कराची लाहौर में देखे होंगे मेट्रो स्टोर और इस तरह के दूसरे करेफोर, टेस्को, दूसरी चेन्स हैं, उसमें अगर आपके पास 1000 ऑफ सेल्स एम्प्लॉइज हैं और आप उनको कहते हैं कि जी इफ़ यू अचीव दिस लेवल, सो हेयर group incentives may not work to a higher level. Well, these group incentives are effective where interdependence is high. जहाँ पे interdependence ज़्यादा होगी, so that is an ideal situation where you can actually implement these group incentives. Otherwise, अगर individual में ही कर, so individual आप individual based incentives दें. Well, these well-designed, what are the qualities are how we can identify well-designed team incentive plan. So actually a team incentive plan would be efficient. ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि जी एक जो efficient team plan है वो क्या करेगा, that it reinforces teamwork. ठीक है ना, जो वेल डिजाइन टीम इंसेंटिव प्लान है उसकी क्या फंक्शंस हैं या उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इट रीइंफोर्सेस टीम वर्क. वेल डिजाइन इंसेंटिव प्लान क्या है, इट वुड बी इंड्यूसिंग टीम वर्क, ज्यादा टीम वर्क लेके आएगा, बिकॉज देयर salary, their compensation is based upon combined efforts, collective efforts based, so it would be inducing teamwork. Well, it may cultivate loyalty. उसमें जैसे आपने टीम बेस्ड इंसेंटिव दिया, सो इट मे प्रमोट लॉयल्टी अमंग टीम, तो आपकी ग्रुप में कोहेजन, ग्रुप में आपकी कोऑपरेशन ज़्यादा होती है. वेल, दीज टीम बेस्ड इफेक्टिव वेल डिजाइन टीम इंसेंटिव प्लान्स वुड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस होती है, बिकॉज दे आर लिंक टू देयर परफॉर्मेंस, सो इट वुड बी डायरेक्टली एक्सर्टिंग एन इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्टिविटी. Well, it would improve quality. टीम बेस ज़्यादा टीम बेस इंसेंटिव के थ्रू क्या, उनकी कॉपरेशन ज़्यादा होगा, उनके आपस में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, काम करने की उसमें मोटिवेशन ज़्यादा होगी, लॉयल्टी, सो दे अल्टीमेटली दे वुड बी अचीविंग हाई क्वालिटी रिजल्ट्स. वेल डिजाइन टीम इंसेंटिव्स बूस्ट अप एम्प्लॉय मोरल, तो जिस टीम के लिए ये इंसेंटिव्स हैं उनका मोरल ज़्यादा होता है. Well, these team incentive plan would tie earning to team performance. जो organization objectives है उसको team performance के साथ link कर देते, जो effective well designed team incentive plans होते हैं वो उसको link कर देते हैं उसकी team performance के साथ. Next we are to discuss how to distribute team incentive. देखें individual के तो आपने determine कर लिए, उसका ये क्राइटेरिया है, ये परफॉर्मेंस में ये है, आपकी ये अचीवमेंट है और आपका इतना इंसेंटिव है. वेल, देयर इज अ प्रॉब्लम विद इन टीम और ग्रुप इंसेंटिव, दैट हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट टीम इंसेंटिव्स. सो देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स वेयर बाय वी कैन डिस्कस दिस टॉपिक. सो हाउ टू रिवॉर्ड, हाउ टू एलोकेट रिवॉर्ड्स, तो क्या जितने भी टीम मेंबर्स 5 हैं, 10 हैं, 14 है, उसमें क्या सेम साइज रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करने, या उसमें जो टीम लीडर है या जिसका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट उससे ज़्यादा मिलने हैं. ठीक है, सेम साइज रिवॉर्ड हो सकता है या डिफरेंट साइज रिवॉर्ड हो सकते हैं. वेल, इन ऑर्डर टू गिव more autonomy or more freedom or liberty to teams, different organizations have actually given decision making about team incentive plans to teams. अब टीम के पास खुद आगे डिसीजन मेकिंग, पूरा जो टीम का इंसेंटिव है वो मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उस टीम. नाउ दिस टीम वुड बी डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट this incentive amount, so it may be actually relieving burden of the organization to the team, and it may be giving certain satisfaction or motivation to team that we are to decide about how to distribute these incentive. Well, organization फिर टीम क्या खुद डिसाइड करेगी how to divide. ठीक है, they may agree to any point. Well, they may decide through voting,
they may choose a team leader. They may actually assign a team leader to decide how to distribute team lead. They may decide to equally distribute team incentives among all the members. Well, certain teams actually are unwilling to handle pay decisions for co-workers. So co-workers के जो paid है वो कहते हैं कि it is a sensitive area, so we should not be involved in the determination of salary compensation for our fellow workers. तो वो कहते हैं कि ये organization खुद ही करे, because they may feel awkward, they may feel uncomfortable while they are going to determine the compensation for their colleagues. Well, an important issue regarding how to distribute this team incentive is the timing of team incentive, that at what time we are to distribute these team incentives. So whether these team incentives should be distributed monthly basis पे होने चाहिए, quarterly, after 3 months होने, semi-annually, 6 months की बात करें या yearly करें. So these are different bases that we can use to actually distribute team incentives. So the quicker you distribute, there is a lesser time gap between actual team performance and allocation of hours, the more effective this plan would be. तो जितना ज़्यादा टाइम कम होगा उसकी टीम की परफॉर्मेंस एरिया में, आपने अगर परफॉर्मेंस एरिया चेक किया जून में, तो ये नहीं आप ईयर एंड पे करें, उसे जून की आप जुलाई में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में या मिड ऑफ जुलाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दें. सो the lesser is that gap between team performance period and the extending of this team rewards, the effective this plan would be. और इस तरह आप जितना ज़्यादा टाइम इसमें लगाते जाएंगे उतने ज़्यादा वो क्या होगी, ineffectiveness आती जाएगी. This was how to distribute team incentives. Then we have to discuss problems with team based incentives. कि अब team based incentives के problems क्या हैं? Well, we may decide, teams or the management may decide that these team incentives would be distributed equally, or they would be difference between the team members with respect to their rewards. क्या equally distribute करने हैं या equitably distribute करने? Equitably mean that we are to focus on performance of individual member within the team. तो equally distribute करेंगे तो जो high performers हैं, जो team leaders हैं, they would be annoyed, they would be angry, they would be feeling that this is unjust, we are not being treated fairly. और अगर आप इक्विटेबली करेंगे फिर उस पर जो पुअर परफॉर्मिंग या जिनकी इनपुट कम इम्पोर्टेंट है वो कहेंगे ये क्या उनको ज़्यादा दे रहे हैं, फिर वो कहेंगे इट इज़ ऑन सब्जेक्टिव बेसिस. सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ दैट इफ़ यू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली दैट हाई परफॉर्मेंस वुड बी annoyed. If you divide equitably, then low performer would be annoyed. This problem would be worsened when we see that poorly performing individuals influence team results negatively. तो उसमें जो लोग कम काम करते हैं वो अगर उनकी परफॉर्मेंस उस पूरे प्रोजेक्ट को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है. किसी ने छोटा सा काम करना है, उस पूरे एंटायर प्रोजेक्ट में टीम ने जो सर्वे किया है, ठीक है ना, सर्वे की डिज़ाइनिंग, उसके एग्जीक्यूशन, डाटा कलेक्शन और उसके बाद में रिपोर्टिंग, एडिटिंग और डाटा एनालिसिस सारा, और फिर फाइनल रिपोर्ट. उसमें किसी जगह पे एक बंदे ने छोटा सा काम करना है और वो उसने गलत कर दिया है, ठीक है ना, उसका काम कम इम्पोर्टेंट था एंड ही हैज एक्चुअली अफेक्टेड एडवर्सली द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल ऑफ द टीम मेंबर्स. सो in such type of situations it is problematic. Now the people would be dissatisfied, the people would be annoyed, the people would be down, because the poor performance of a single person is actually going to waste the performance of all of the people. If we see that these are the objections or we can say that limitations of team-based incentives, so why not we still abandon this team-based incentives. We are forced to go for team-based incentives because employees still expect that they should be paid on individual performance. Now we have discussed that these are the problems with team-based incentives. Now we are to discuss certain new topics. So this slide actually shows the conditions
where we can see that team incentives would be successful or team incentives would simply fail. तो इस साइड पे क्या है जी, situations where team incentives would be successful, ये success को कर रहा है, team incentive ये failure को कर रहा है. Well, these are the reasons on which, these are the points on which we can decide the team incentive, that whether they would be a success or a fail. So इसमें हम देखते हैं कि टीम वर्क नीडेड, टीम वर्क की बेस पे डिसाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेस पे डिसाइड कर सकते हैं, मैनेजरियल सपोर्ट की बेस पे, रिवार्ड फेयरनेस एंड एम्प्लॉय इनपुट. दीज आर द फ्यू basis on which we can see that whether this incentive plan, team-based incentive plan, would be a successful or would be a failed venture. Well, this plan would be successful when cooperation is necessary to do the job. जहाँ पे cooperation चाहिए वहाँ पे ये team incentives work करेंगे. Where teamwork is not needed to do the job, so this incentive, team-based incentive, may fail. Well, this individual performance cannot be identified. जहाँ पे individual performance identify करना मुश्किल है, तो वहाँ पे क्या है, उसकी chances ज़्यादा है success के. Each individual performance level is clear. जहाँ पे individual performance measure करना clear है, वहाँ पे आप team based incentive ना दें. Sales performance, sales level, sales officer की performance measure करना बहुत easy है individual level, so वहाँ पे team based या group rewards नहीं होनी चाहिए. Well, management wants teamwork. Teamwork is promoted. Teamwork is supported. Manager support, organization support करता team को. Well, management sees little value in teamwork. Teamwork उसका focus ही नहीं है management का. So अगर focus नहीं है तो team incentive जो है ना वो fail हो जाएंगे. अच्छा, reward system जो है ये incentive, group incentive, वो fair देखे जाते हैं. Employees perceive these rewards as fair. Well, reward system is seen as unfair. अगर उनको reward system ठीक नहीं लगेगा फिर वो fail हो जाएगा ये system. अच्छा, employees have input into incentive design. So if you have input from employees while designing this system, then we can see that this step would ensure the success of this team-based incentive plan. If incentive plan is imposed without employee input, so we may expect this plan would be a failed one. So these are the points on which we can check the success or failure of a team incentive plan. Now moving further, we are to discuss the types of group incentives. So what are the different types of group incentives? So there are two options. One is work team results, another is gain sharing. Well, what are work team results? So their work team results may reward equally on the basis of group output. ग्रुप आउटपुट जो भी है वो इक्वल बेस पे रिवॉर्ड करते हैं. आउटपुट किन टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं? इट मे बी टेकन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट सेविंग, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट, and in terms of increased sales revenue. So you may have actually identified various bases on which you would be measuring performance of group, and actually this plan may reward equally on the basis of this group output. जो भी group output आपने देखी है उसकी बेस पे आपने कहना है कि जी you may receive this group incentive on equal basis. For example, an organization had decided for each 1% improvement over baseline in the shipping group's rate of on-time delivery each month. So it has decided this performance measure on the basis of on-time delivery for a shipping department. उसने कहा कि on-time delivery आपकी measure होगी, और if you achieve a 1% improvement on baseline उसका क्या है जी 90%. उसने कहा हुआ है baseline इसका है जी 90%. उसके ऑन टाइम डिलीवरी रेट, ऑन टाइम डिलीवरी रेट क्या है 90%. कहते हैं इससे जितना ज़्यादा परसेंट ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा आपको अमाउंट मिले. लेट्स से दे से दैट 1000 per person. So if for a given month June they have achieved 94% rate, on time delivery rate. So excess में क्या है जी 4%, और 4% multiplied by 1000, so it is 4000. So this is for individual employee. individual employee के लिए 1000 है, ठीक है. सबको उस
उस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं उन सबको 4000 बिकॉज दे हैव एक्चुअली अचीव्ड अ 94% ऑन टाइम डिलीवरी सो ईच मंथ वो उन्होंने अचीव किया है, तो सबको 4000 मिल रहा है. दिस इज वर्क टीम रिजल्ट. सो हेयर यू कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस डिफरेंट work groups, different departments to achieve higher performance, higher level of performance. You can set such type of targets for such type of group incentives for quality control department, for inspection department, for production department, for even accounting department. Lesser number of errors, lesser number of mistakes, उसके लिए आप सेट कर सकते हो. सो ग्रुप टाइप, ये टाइप्स ऑफ ग्रुप इंसेंटिव में पहले क्या है, वर्क टीम रिजल्ट्स. जो भी एक वर्क टीम है उसका आप अनाउंस कर दें कि जी इस बेस पे आपको वैल्यूएट किया जाएगा और इस तरह ये सारी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होनी है. सो हियर यू कैन अचीव हाई लेवल परफॉर्मेंस बाय डिसाइडिंग दिस ग्रुप इंसेंटिव. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? Next we can see that another method is gain sharing. Well, most of the group incentives are designed on self-funding principle. What is self-funding principle? It means that the incentives are the money that you spend on this group incentive. इस group incentive पे जो भी amount लगनी है, that is self-funded. That is to be generated by the excess amount of efforts to be generated by the given group. तो एक ग्रुप जितना ज्यादा काम करेगा उसकी जो भी आपकी बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को, that would be shared among employees. ठीक है. So this is actually works on self-funding principle. So इसकी एक एग्जांपल क्या है, गेन शेयरिंग. जितना ज्यादा गेन होगा उतना ज्यादा हम शेयर कर रहे हैं. So it is the sharing with employees of greater than expected gains in productivity. तो productivity में जो उनके expected gains है उससे ज्यादा जितना भी होगा that is to be shared among employees. Well, how it works? जो गेन शेयरिंग ये कैसे काम करता है? Actually it targets discretionary effort of employees. It actually attempts to increase this discretionary effort. So discretionary effort क्या है? Actually this is the difference between what a typical employee can perform. उसका ideal, उसकी actual जो capacity है वो किस level पे है, ठीक है ना. तो हम कहते हैं कि जी वो इस level तक perform कर सकता है, ये उसकी capacity या capability है. To how much extent, to how much level this person can perform. और एक है उसका minimum level. This is the level of performance that is required to continue job with this organization. तो आप अगर इतना acceptable level पे करते हैं, आप you produce 15 products in a given day or given time period. और आप actually ये क्या कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, ठीक है ना. So this is discretionary effort. The difference between these two levels, अब क्या है डिफरेंस 15 से लेकर जो 20 तक, ये डिस्क्रिशनरी एफर्ट है. कर सकते हैं एम्प्लॉइज, लेकिन वो करते नहीं. वो कहते हैं हमने उतना काम करना है जितना ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर करते, जितना जिससे हम अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकें, मेंटेन कर सकें. तो लोग जानबूझ के कम काम करते हैं. दे विलिंगली परफॉर्म एट लोअर लेवल्स just to continue the job, just to have this job. अच्छा, अब इसमें क्या है, जो गेन शेयरिंग है वो इस डिस्क्रिशनरी एफर्ट, ये जो गैप है इसको उसने टारगेट करना है कि जी आप इसको ज्यादा करें, जो भी एडिशनल गेन्स है हम सबके साथ शेयर करेंगे. इट अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज डिस्क्रिशनरी एफर्ट. यूजुअली वर्कर्स आर नॉट पेड फॉर डिस्क्रिशनरी एफर्ट बिकॉज दे सी दैट इतना काम करना है, इसका हमें पैसा मिलता, हम ज्यादा क्यों करें. सो जब आप कहेंगे कि जी ज्यादा काम करने के आपको पैसे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस ग्रुप इंसेंटिव, सो एम्प्लॉइज वुड बी encouraged. Well, this management must identify the ways in which increased productivity, quality and financial performance can occur. ठीक है ना. तो अब देखना है कि जी किस तरह से ये परफॉर्मेंस या क्वालिटी या उनकी प्रोडक्टिविटी या कस्टमर सर्विस कैसे इंक्रीज हो सकती है, किस तरह हम इनके लिए इंसेंटिव डिजाइन करें, इनके जॉब डिजाइन कैसे हों, इनकी कंपनसेशन कैसे, टोटल कंपनसेशन कैसे डिजाइन हो, सो दैट वी कैन एक्चुअली मेक देम टू परफॉर्म एट हायर लेवल्स. सो वी आर टू डिसाइड
how to in respect of this gain sharing plan, we have to decide how to share gains with employees. कैसे अब शेयर कैसे करेंगे, गेन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्या जी वी आर टू गो फॉर अ फ्लैट अमाउंट फॉर ऑल एम्प्लॉइज, जो एक जो ग्रुप है या टीम है क्या उसमें सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? दिस इज अ क्वेश्चन. वी कैन गो फॉर सेम परसेंटेज ऑफ बेस सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉइज, सेम परसेंटेज. ठीक है, हम कह दें कि जी सैलरी का बेस सैलरी का 10%, ठीक है ना, तो अब जिसकी बेस सैलरी ज्यादा होगी उसकी ऑटोमेटिकली जो अमाउंट होगी इंसेंटिव अमाउंट वो ज्यादा होगी. तो सेम परसेंटेज ऑफ बेस सैलरी, ये एक बंदी की बेस सैलरी 40,000 है तो उसके लिए ये क्या होगा 10% 4,000 होगा. एक के लिए उस एक की सैलरी 10,000 बेसिक, उसकी इंसेंटिव क्या हो जाएगा 1,000 हो जाएगा. सो सेकंड फार्मूला है कि सेम परसेंटेज यूज करना बेस सैलरी का. थर्ड है परसेंटेज ऑफ द गेन्स बाय कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज. तो आप एम्प्लॉयज की कैटेगरी डिसाइड कर दे कि मैनेजरियल को इतना मिलेगा, वर्कर को इतना मिलेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ये है रेट और दूसरे किसी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए रेट ये है. आप इस तरह कर सकते हैं. देन अनदर ऑप्शन इज अ परसेंटेज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट मेजर. तो उसमें आप परफॉर्मेंस मेजर्स आइडेंटिफाई कर लें और उसके अगेंस्ट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मेजर करके और फिर एलोकेट करें रिवॉर्ड्स बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. सो इसमें क्या ये ज्यादा इक्विटेबल की तरफ हम चले जाएंगे. अच्छा, these for two types of group incentive, work team rewards and gain sharing. Then we have to discuss advantages and disadvantages of group incentives. Advantages क्या हैं जी? Performance measures for group incentives can be developed more easily. अब कैसे हम कहते हैं कि जी परफॉर्मेंस मेजर्स ग्रुप के लिए डिज़ाइन करना आसान है, इंडिविजुअल के लिए आसान करना मुश्किल है. इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स थोड़े हैं. डिपार्टमेंट अगर हम सिंपल देखें तो 4-5 या 10 डिपार्टमेंट होंगे. अगर टीम्स देखें तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन टीम 20, 25, 40 हों, लेकिन इंडिविजुअल्स तो ऑटोमेटिकली ज्यादा होंगे. सो वी से दैट परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर ग्रुप इंसेंटिव्स कैन बी डेवलप मोर इजीली. व्हाट इज नेक्स्ट इज जजिंग द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट मेक्स द सेंस. अब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो सकता है सेमी प्रोडक्ट, सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए हो, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए हो, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस क्या होगी, जज होगी इन टर्म्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स दैट मेक सेंस. अच्छा, इट लीड्स टू ग्रुप कोहेजन, तो ग्रुप एफर्ट ज्यादा होगी. सो दीज आर एडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस क्या है जी? वी सी हाई टर्नओवर बिकॉज ऑफ फ्री राइडर इफेक्ट. फ्री राइडर इफेक्ट आपको पता होगा, आप भी जब असाइनमेंट्स बनाते हैं तो उसमें अगर 4 लोगों का ग्रुप है तो एक बंदा काम करता है, 3 बंदे काम नहीं करते. जो नहीं करते वो क्या होता है, फ्री राइडर. सो वी सी दिस फ्री राइडर फिनोमिना विद इन टीम. सो बिकॉज ऑफ दिस फ्री राइडर फिनोमिना employees would be leaving, the people who are working alone would be leaving the organization. और इसमें important चीज क्या है, employees who make the greater contributions are likely to leave. वही लोग जो जाएंगे ना, जो उनको लगेगा कि काम हम करते हैं, बेनिफिट सारे लेते हैं, तो वो रिजाइन करेंगे. अच्छा, ग्रुप मेंबर्स आर अनकंफर्टेबल बिकॉज अदर मेंबर्स परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस देयर कंपनसेशन. तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि देखते हैं कि दूसरे लोगों की परफॉर्मेंस की वजह से हम सफर होते हैं. इफ दे परफॉर्म लो देन वी वुड बी रिसीविंग लो. इफ दे परफॉर्म नेगेटिवली, एडवर्सली, देन इट अफेक्ट्स आवर परफॉर्मेंस. और अगर किसी ने काम नहीं किया, पूरी टीम अपने गोल्स को लूज कर जाएगी, गोल्स को क्या लेके मिस कर जाएगी. सो दे मेंबर्स सी दैट देयर compensation is actually dependent upon the performance of other people. So this may be one of the disadvantages of group incentives. Now this was something about group incentives. Now we have to start our discussion on organizational incentives. These are third type of organizational incentives, are third type of variable pay. First is individual incentives, second group incentive, third is organizational incentives. So an organizational incentives system, incentive system organization based है, it compensates all employees in the organization based on how well the organization as a whole performs during the year. पूरे साल में ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म करती है और उसमें से सबको फिर मिलता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है. अब ये क्यों हम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव क्यों हम यूज करते हैं? बिकॉज ओवरऑल रिजल्ट्स डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशनल आर
प्लांट वाइड कॉपरेशन। अब इंडिविजुअल टीम में भी अगर हम देख रहे हैं कॉपरेशन हमने कर लिया और टीम बेस्ड इंसेंटिव की और डिपार्टमेंट्स में कॉपरेशन, बट इफ वी आर नॉट एबल टू gain a cooperation or we are not able to produce a concerted effort, holistic effort at the organization level, we won't be able to see the organization achieving its objectives. ठीक है, तो because overall results depend upon organizational or plant wide cooperation, so we are required to go organizational incentives. अच्छा, conflict between marketing and production can be overcome through designing organizational objectives. तो क्या होता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है कि हमने उसकी क्या करनी है, ज़्यादा करनी, क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, उसमें क्वालिटी मटेरियल होने, उसमें फीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, ऑन टाइम डिलीवरी देनी है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कहेगा कि जी हमने कॉस्ट कट करनी है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करेगा हमने कॉस्ट कम करनी है, इन्वेंट्री मैनेज कहेगा हमने अपनी इन्वेंट्री लेवल डाउन रखना है इन ऑर्डर टू सेव द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन different departments can be overcome only by designing these organizational incentives. अच्छा, such plans, ये जो organizational incentive plans हैं, should include everyone from non-exempt employees to managers and executives. ये नहीं होगा कि जी अब या तो आपने सिर्फ वर्कर्स के लिए कर दिया है और उसमें एग्जेक्टिव नहीं या मैनेजर नहीं, या मैनेजर्स हैं तो उसमें वर्कर्स नहीं है, सबके लिए हो ये इंसेंटिव, ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव्स में सारे लोग शामिल हो, किसी एक के लिए नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव कोऑर्डिनेटेड एफर्ट एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, सो वी आर टू एक्चुअली मेक पार्ट ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स, नॉन एग्जाम जो वर्कर लेवल्स हैं, लेबरर्स हैं, हम मैनेजर्स को भी करना और एग्जेक्टिव्स को भी करना, सो दैट वी कैन हैव अ कंसर्टेड एफर्ट, अ सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट। वेल, ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव्स है, इसकी टाइप्स क्या हैं जी, हियर वी कैन डिस्कस प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शंस एंड एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान. सो वी आर टू डिस्कस these three types of organizational incentives. What is profit sharing? Well, profit sharing is a system to distribute a portion of the profits of the organization to employees. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जितना भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ ना, हम कहते हैं उसका टोटल प्रॉफिट का 5%, 10% हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये क्या, इट्स अ वे टू मेक interested or engaged each and every employee within organizational goals, organizational objectives. सारे लोग फिर individual efforts ना करें, सारे लोग ऐसे efforts करें जो organizational goals achievement की तरफ लेके जाती है। अच्छा, हम जब ये डिसाइड करते हैं ना, ये परसेंटेज ये पहले से एग्रीड होती है, ठीक है। टिपिकली परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूट इज एग्रीड ऑन बाय द एंड ऑफ द ईयर बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जैसे इंडिविजुअल इंसेंटिव्स थे वो प्रायर द स्टार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी, प्रायर द स्टार्ट ऑफ दैट वर्किंग पीरियड, उस मंथ के या उस ईयर के स्टार्ट होने से पहले अनाउंस करनी है। ये एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले अनाउंस करनी है। अब इसमें एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद हम क्यों अनाउंस करते हैं, बिकॉज we are not sure that to how much extent we would be able to have profit. तो हम प्रॉफिट जब हो जाता है उसके बाद फिर अनाउंस करते हैं कि अब हम इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग एम्प्लॉइज। वेल, प्रॉफिट्स मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट ईयर एंड, ठीक है ना, ईयर एंड पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक और ऑप्शन क्या है कि दीज आर डेफर्ड एंड मेड अवेलेबल एट रिटायरमेंट। तो बिकॉज हम सेविंग नहीं करते, हमारे पास रेनी डे के लिए कुछ भी नहीं होता, सो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनके लिए खुद मैनेज करती हैं ये सारे उनकी फाइनेंशियल उसकी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दिस पेमेंट डेफर्ड वन एंड गिविंग देम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अच्छा, इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं प्रॉफिट शेयर के हैं जी, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, और क्या है इसके जी, टू रिक्रूट और रिटेन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को रिक्रूट करने के लिए या रिटेन करने के लिए, टू इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी और टू इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल। सो दीज आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस प्लान? Well, because this is a profit sharing plan, so organization is required to give certain financial information to all the members of its organization, to all employees.
अच्छा फाइनेंशियल उसने देनी है, फिर उसने ये बताना है कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट जो है तो फिर बताना पड़ेगा प्रॉफिट कैसे हुआ है, अकाउंटिंग टर्म्स बतानी पड़ेंगी, और सबको फिर पता नहीं होता। सो इट में एक्चुअली काज सर्टन प्रॉब्लम द मोमेंट यू आर गोइंग टू डिस्क्लोज योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड because people aren't aware of technical terms, so they may actually raise certain objections that are not solid or that not reasonable. There is a problem with respect to employees that they would be complaining when the profit varies from year to year. जब देखते हैं कि पिछले साल से कम हो गया, फिर कहते हैं अच्छा अब मैं बताओ क्यों कम हुआ है, आपने क्या गलत किया है। So they may be questioning on the areas that doesn't come into their domain. तो वो खाम खा दूसरी चीज़ों में इन्फ्लुएंस या एंटर होने की कोशिश करेंगे। वेल दिस प्रॉफिट रिजल्ट्स मे रिजल्ट नॉट स्ट्रांगली, प्रॉफिट जो रिजल्ट्स हैं मे नॉट स्ट्रांगली टाई टू एम्प्लॉय एफर्ट्स। जो प्रॉफिट है ना आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और ये तो ईयर एंड पे हुए हैं और पूरे साल काम करते हैं, so they may not see a direct or clear link between their efforts and the profit that is accrued at the end of the year. So there may be a very weak link between profit and their efforts. So these are the drawbacks or limitations of a profit share plan. So what is the next plan? अच्छा इसमें देखिए प्रॉफिट शेयर जो प्लान है इसकी डिफरेंट चॉइसेस क्या हो सकती हैं। फंडिंग चॉइसेस क्या हैं जी, इसमें हम फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स कर सकते हैं। प्रॉफिट क्या जी 10%, स्लाइडिंग परसेंटेज बेस्ड ऑन सेल्स और रिटर्न ऑन एसेट्स। तो हम प्रॉफिट की बजाय कोई और बेस ले लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड और रेवेन्यू बेस पे हम ले सकते हैं, या रिटर्न ऑन एसेट पे ले सकते हैं। अच्छा यूनिट प्रॉफिट ले सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड पे ले सकते हैं, कोई और फार्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, हाउ टू एलोकेट दीज रिवॉर्ड्स। अच्छा इट मे बी गिवन इक्वली टू ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है ना, और इट में बेस्ड ऑन एम्प्लॉय अर्निंग्स, उसकी सैलरीज के ऊपर बेस कर सकते हैं, जिसकी जितनी बेसिक सैलरी है उसको उस हिसाब से मिले, उसकी एक खास परसेंटेज बेसिक सैलरी की। इट में बी बेस्ड ऑन अर्निंग्स आर ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है ना, जिसकी ज्यादा सर्विस है उसके ऊपर बेस कर सकते हैं। इट में बी बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन एंड परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस भी किसी तरह से चेक कर सकते हैं। इतनी ज्यादा डिटेल में हम इस लेक्चर में नहीं जा सकते। अच्छा नेक्स्ट है जी हमारा प्लान एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। सो दिस इज अ प्लान दैट गिव्स एम्प्लॉयज द राइट टू परचेज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी स्टॉक एट अ स्पेसिफाइड प्राइस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये ऑप्शन देती है और एक्चुअल सेल नहीं करती है स्टॉक को, ऑप्शन देती है दैट यू कैन अवेल दिस स्टॉक दिस नंबर ऑफ शेयर्स एट अ गिवन प्राइस, जो मार्केट से कम होती है, और फिर जब आपका दिल चाहे देखें प्राइस ज्यादा हो तो इसे सेल करते हैं, ठीक है ना। सो व्हाई दे गो फॉर, इसमें क्या है जी इंपॉर्टेंट क्या है जी, इट इज फॉर गिवन दिस चॉइस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, आपने उसके बाद हर हाल में छोड़नी है। अच्छा दिस परचेजिंग एंड होल्डिंग द कंपनी स्टॉक इज थॉट टू गिव एम्प्लॉइज a vested ownership in seeing the company do well. So actually this is a mechanism by which they are going to induce employees to work well, because they want to see the company doing well, because they have now their stake within the organization, because they have certain they have exercised their rights, options उन्होंने ले ली हैं। अच्छा this system provides incentive to work productively। अब एम्प्लॉइज क्या ज्यादा उसमें प्रोडक्टिवली काम करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है जी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। तो उसमें सिर्फ उनको ऑप्शन थे, यहाँ पे ओनरशिप आ गई है। हेयर एम्प्लॉयज गेन स्टॉक ओनरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे वर्क, उसमें परचेज कर लेंगे ये। अच्छा ये क्या जी, हेयर इट प्लेस कंपनी स्टॉक इन ट्रस्ट अकाउंट्स फॉर एम्प्लॉयज। तो एक अकाउंट बना दे तो उस ट्रस्ट अकाउंट में वो सारे स्टॉक डाल देंगे। अच्छा दीज ट्रस्ट आर सेट असाइड एज अ सोर्स ऑफ रिटायरमेंट इनकम, हो सकता है उसको फिर रिटायरमेंट इनकम के तौर पे यूज करें। वी कैन सी दैट इट इज इट्स सिमिलर टू डेफर्ड प्रॉफिट शेयरिंग, बाद में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अच्छा सम ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स मे बी टाइड टू द फर्म्स परफॉर्मेंस। उस अब चूंकि आपके पास शेयर्स आ गए हैं और एक ट्रस्ट अकाउंट बना दिया, उसमें से उन्होंने आपको डेफर्ड पेमेंट देनी है, सोर्स ऑफ रिटायरमेंट इनकम है। सो हेयर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर लिंक्ड टू फर्म परफॉर्मेंस,
ठीक है ना। तो फिर आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फर्म परफॉर्मेंस। सो नाउ एम्प्लॉइज आर इंड्यूस्ड टू वर्क हार्डर एंड हार्डर। Next topic is executive compensation. Here CEOs receive millions of dollar. अब उनकी क्या यहाँ पाकिस्तान में 20 लाख 40 लाख सैलरीज देखते हैं, वहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होते हैं, जो बहुत एक बड़ी अमाउंट हो जाती है। वेल CEO फॉल इन हाई टैक्स ब्रैकेट्स, उनकी टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, CEOs वांट कंपनसेशन इन वेज दैट ऑफर टैक्स एडवांटेज। वो कहते हैं हमें इस तरह का पैकेज बना कर दें जिसमें टैक्स कम लगे, ठीक है। टोटल कंपनसेशन पैकेजेस आर मोर सिग्निफिकेंट देन बेस पे। जो CEOs होते हैं उनकी टोटल कंपनसेशन बहुत ज्यादा होती है, उनकी सैलरी या उसकी जो कह लें कि डायरेक्ट पे होती है, मंथली सैलरी होती है, वो कम होती है। सो इट्स अ क्रिटिकल एरिया डिसाइडिंग हाउ टू मेक ओवरऑल कंपनसेशन फॉर एग्जेक्टिव्स, फॉर CEOs। These are the different components of executive compensation। इसमें उसकी सैलरीज हैं, एनुअल बोनस है, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव, सप्लीमेंटल बेनिफिट्स और पर्क्स इसे कहते हैं। अच्छा, हम ये सारे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एग्जेक्टिव सैलरीज, जो इसकी बेस सैलरी हम कहते हैं, monthly salary that is linked to a given time period. So salaries vary by type of job। किस किस्म की जॉब है, फाइनेंस की है, मार्केटिंग की है, HR की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, टेक्निकल है, कौन सी जॉब है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी इंडस्ट्री। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमिन एग्जेक्टिव सैलरीज। एग्जेक्टिव बोनस प्लान्स, ठीक है, तो उसको ईयरली बेसिस या किसी क्वार्टर पे लंप सम पेमेंट मिलती है इन एग्जेक्टिव्स को। वेल बोनस कंपनसेशन मस्ट रिफ्लेक्ट सम परफॉर्मेंस मेजर्स। अब अगर उसकी एग्जेक्टिव सैलरी लिंक नहीं है परफॉर्मेंस के साथ, ये बोनस लास्ट में उनके साथ होने चाहिए लिंक परफॉर्मेंस के साथ, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी रियलिस्टिक, रैशनल होती है ना ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कम हो रहा है और उसके बोनस उसको मिल रहे हो, उसकी सैलरी तो चलो ठीक है उससे मिल, लेकिन ये ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन की सेल कम हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है, उसका मार्केट शेयर कम हो रहा है, आप उसे बोनस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपने ख्याल करना है। बोनसेस में बी डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आर टाइड टू अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और नेट प्रॉफिट। तो इस तरह आपने लिंक करना है। अच्छा, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स हम देख सकते हैं इसमें जी, स्टॉक ऑप्शंस जो हमने डिस्कस किया है, और इसी तरह एक शेयर एप्रिसिएशन राइट होता है, उसे कहते हैं कि अब आप अपनी चेक कर लें, आप इतने शेयर्स आपके पास राइट्स हैं शेयर्स के, अब जो इसकी प्राइस है और जब आप छोड़ेंगे या एक टाइम पीरियड के बाद हम कैलकुलेट कर उसके प्राइस क्या, तो जो डिफरेंस है, जो गेन है, वो आपको मिलेगा। अच्छा, बेनिफिट्स एग्जेक्टिव्स के लिए क्या है जी, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस, वैकेशन, रिटायरमेंट, ये क्या जी उनके बेनिफिट्स हैं। और ये है जी टर्म एग्जेक्टिव पर्क्स। अच्छा, these are special benefits, usually non-cash items for executive. These are only for executives. Well, perks help tie executives with organizations and demonstrate their importance to their companies. अब perks क्या करते हैं जी, इसके दो फंक्शन होते हैं यूजुअली। they help tie executives with organization। अब ये लिंक हो जाते हैं कि जी मुझे चूंकि इतनी ज़्यादा मिल रही है, कंपनी ने मुझे कार दी हुई है, कंपनी ने मुझे हेलीकॉप्टर दी है, कंपनी मेरे लिए ये चीज़ कर रही है, सो दे एक्चुअली एसोसिएट देमसेल्फ विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन दिस वे दे डेमोन्स्ट्रेट देयर इंपॉर्टेंस टू देयर कंपनी। दूसरी चीज़ क्या है, वो कंपनी को अपनी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, आई हैव ऑफ दिस मच वर्थ, ठीक है, यू आर टू पे मी, तो अपनी वर्थ दिखाते हैं। सो दे एंजॉय इन दिस वे अ सोशल स्टेटस, ठीक है। तो उनको बहुत क्या लेके लेविश किस्म के, लग्जरी किस्म के जो उसको बेनिफिट्स, जो उसको फैसिलिटीज दी, जो सर्विसेज देते हैं, दे कम अंडर दिस हेडिंग पर्क्स। अच्छा, पर्क्स फिर क्या इसके एडिशनल बेनिफिट क्या, दे कैन ऑफर टैक्स सेविंग, टैक्स इन पे नहीं लगता, बेनिफिट्स पे या पर्क्स पे टैक्स नहीं लगता। दिस वाज एग्जेक्टिव कंपनसेशन। अब जो उसमें फाइनल पॉइंट था कॉमन पर्क्स था, तो हम देखते हैं कि कॉमन एग्जेक्टिव पर्क्स क्या हो सकते हैं। इसमें यूजुअली क्या होता है जी, कंपनी कार और कार अलाउंस, कंपनी कार देती है अपने CEOs को या टॉप एग्जेक्टिव्स को, सीनियर मैनेजर्स को। अच्छा, दे मे बी अलाउड टू हैव फर्स्ट क्लास एयर ट्रैवल, एयरलाइंस के थ्रू ट्रैवल करना। देन दे मे बी अलाउड टू यूज कंपनी एयरप्लेन,
कंपनी के पास अगर कोई इस तरह के चार्टर प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी फाइनेंशियल लीगल है, तो इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग, पहले ये ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी है, फाइनेंशियल या लीगल कैटेगरी है, और तीसरी मेंबरशिप है। ये 3 कॉमन कैटेगरीज हम यहाँ पे देखते हैं। सेकंड फाइनेंशियल लीगल कैटेगरी, सो हेयर वी सी दैट फाइनेंशियल प्लानिंग उनकी ऑफर करते हैं उनको डिफरेंट कंसल्टेंट्स, डिफरेंट फर्म्स के थ्रू कि आपकी ये फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, आपको इंश्योरेंस या डिफरेंट पॉलिसीज बना के देंगे। अच्छा, टैक्स प्लानिंग या टैक्स प्रिपरेशन, हर इंडिविजुअल ने टैक्स पे करना होता है, तो उसकी सारी इनवाइस या टैक्स कैसे बनेगा, टैक्स रिटर्न इनवाइस कैसे बनेगी, वो सारी चीज़ें क्या है, उनको सर्विस देते हैं कि जी अब ये कंपनी आपके लिए ये चीज़, ये सर्विस परफॉर्म करेगी। अच्छा, उनको इंटरेस्ट मिलते हैं एट नो लोन, उनको लोन मिलते हैं, लोन मिलते हैं एट लो और नो इंटरेस्ट रेट। कॉमन ये प्रैक्टिस है बैंक्स में, ठीक है, बैंक्स के पास तो पैसा पड़ा है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को फेवर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स एट अ वेरी चीप इंटरेस्ट रेट, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन उनको ऑफर किया जाता है। दैट्स वाई दीज बैंकर्स आर एबल टू परचेज देयर ओन रेंट, ओन हाउस, और फिर उसकी रीपेमेंट करते रहते हैं, उनकी सैलरी से वो डिडक्ट होते रहता है। लीगल काउंसलिंग के यहाँ पे ये भी होता है कि उनको कुछ एडवोकेट्स, लॉयर्स, लॉ फर्म्स उनके डिस्क्रिप्शन पे होती हैं कि दे इज वुड बी परफॉर्मिंग सर्टन लीगल एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ सीईओज। अच्छा, मेंबरशिप के कैटेगरी में वी कैन सी दैट दे कैन हैव मेंबरशिप ऑफ कंट्री क्लब, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद क्लब, लाहौर गैरिसन क्लब, इस तरह डिफरेंट क्लब होते हैं, और हेल्थ क्लब की उनकी हो सकती है मेंबरशिप, और सम दूसरे ये लंचन क्लब, कुछ और चीज़ों की उनकी मेंबरशिप हो सकती है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर 14। वी आर टू डिस्कस आर्गुमेंट्स इन द एग्जेक्टिव पे, कि एग्जेक्टिव को इतना ज़्यादा जो हाई पे करते हैं वो क्यों करें, ठीक है। इसमें हम देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है और काउंटर आर्गुमेंट्स क्या है। अच्छा, इसमें ये है जी क्रिटिसिज्म क्या है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर गिव साइजेबल रिवॉर्ड्स ऑफ बोथ हाई एंड लो परफॉर्मिंग एग्जेक्टिव्स, कि आप बहुत ज़्यादा उनको बोनस देते हैं, जिसने काम किया है उसको भी, जिसने नहीं किया उसको भी। सो इसका आर्गुमेंट क्या है जी, द मार्केट फॉर एग्जेक्टिव्स इज टाइट, नहीं मिलते आराम से, बिडिंग वॉर्स एंड कंसर्न ओवर रिटेंशन ड्राइव कंपनसेशन पैकेजेस। तो चूंकि हम सारे कंपटीशन में हैं, इन ऑर्डर टू रिटेन और इन ऑर्डर टू एक्सेस द सीईओ, सो इट एक्चुअली रिक्वायर्स अस टू गो फॉर हाई कंपनसेशन पैकेजेस। अच्छा, नेक्स्ट है जी उसका क्रिटिसिज्म, एग्जेक्टिव्स शुड नॉट गेट रिवॉर्ड्स एंड बोनसेस फॉर लेइंग ऑफ मच ऑफ द वर्कफोर्स। कहते हैं कि इसने क्या किया, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, 1000 एम्प्लॉयज़ को उसने फारिग कर दिया, तो इसे किस चीज़ के आप बोनस दे रहे हैं, किस चीज़ के रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। अच्छा, उसका क्या काउंटर आर्गुमेंट क्या है, उसका जवाब क्या है, एग्जेक्टिव्स आर पेड फॉर मेकिंग डिफिकल्ट डिसीजंस टू बेनिफिट कंपनीज, के अब उसने इतना डिफिकल्ट डिसीजन लिया इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के फेवर में लिया उसने डिसीजन। अच्छा, क्रिटिसिज्म क्या है जी, टोटल कंपनसेशन पैकेजेस स्पेशली विद द गोल्डन पैराशूट्स फॉर फेल्यूर आर आउट ऑफ लाइन। गोल्डन पैराशूट्स क्या होते हैं कि जी जब एक सीईओ छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना, या उसकी कंपनी एक्वायर हो गई, उसकी कंपनी मर्ज हो रही है, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि जी सैलरी, एनुअल सैलरी 2 or 3 times ऑफ एनुअल सैलरी, तो ये तो करोड़ों में बन जाएगी, ठीक है ना, तो इतनी ज़्यादा इनको क्यों पे हो रही है। इसका क्या रिस्पॉन्स क्या है जी, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट स्टार्स अर्न एज मच आर मोर फॉर प्लेइंग गेम्स आर एक्टिंग। कहते हैं अगर उनको इतना ज़्यादा मिल रहा है तो ये भी तो हाई परफॉर्मेंस है ना, ये तो भी अपनी फील्ड के स्टार्स हैं, तो इनको भी मिलना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है, मैनी पीपल कंट्रीब्यूट टू अ कंपनी सक्सेस, नॉट जस्ट द सीईओ, अदर्स आर पेड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सीईओज सैलरी। कहते हैं कि जी सारे लोग करते हैं, सिर्फ सीईओ काम नहीं, सारे काम करते हैं, तो सिर्फ सीईओ को इतनी सैलरी क्यों दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके काउंटर आर्गुमेंट क्या है जी, सीईओज अर्न देयर मनी विद एंडलेस आवर्स, वो दिन रात काम करते हैं, दे आर अंडर ग्रेट प्रेशर्स एंड स्किल सेट्स दैट फ्यू अदर्स पोजेस। तो उनकी जो
स्किल्स है या नॉलेज है या एबिलिटी है वो दूसरे लोगों के पास नहीं होती। अच्छा, फाइनल्स का क्रिटिसिज्म क्या, एग्जेक्टिव कंपनसेशन फ्रीक्वेंटली इज नॉट लिंक टू कंपनी परफॉर्मेंस, वो कहते हैं कंपनी परफॉर्मेंस के साथ लिंक नहीं होती। सो काउंटर आर्गुमेंट है कि मेजरिंग एग्जेक्टिव परफॉर्मेंस इज डिफिकल्ट एंड स्टॉक प्राइसेस अलोन आर इनसफिशिएंट। स्टॉक प्राइसेस में तो वो बहुत सारी कंपनी के बियॉन्ड जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, वहाँ पे कहें कि वहाँ पे सट्टे चलते हैं, वहाँ पे फ्यूचर परचेजिंग होती है, वहाँ पे स्पेकुलेशन होती है, वो प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। सो इट्स डिफिकल्ट टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ CEOs. Well, this was something about criticism and our counter arguments regarding how to pay, why to pay high salaries to executive CEOs. Well, we have completed our lecture 14. Here I'm going to give you the summary of lecture 14. We have discussed why to go for team incentive, because organizations cannot make their employees to work harder and harder, where they require them to work in teams, where the work is interdependent, where work needs cooperation. So we have to go for team incentives. Here they would be working in team, and it is beneficial to have major work within teams, because it is we can say that it makes sense, because teams would be giving final products. अच्छा, ग्रुप और टीम इंसेंटिव्स हैं क्या, ये जी इंसेंटिव्स इन द टीम्स को दैट आर लिंक टू देयर परफॉर्मेंस ऑन ग्रुप बेसिस आर टीम बेसिस एंड आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एम्प्लॉयज ऑन वेरियस बेसिस। इक्वल हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकती हैं बेसिस। अच्छा, हमने डिस्कस किए जी प्रॉब्लम टीम बेस्ड इंसेंटिव्स के साथ ये क्या है। देन वी डिस्कस टाइप्स ऑफ ग्रुप इंसेंटिव्स। इसमें हमने कहा कि जी वर्क टीम गोल्स होते हैं, वर्क टीम इंसेंटिव्स और गेन शेयरिंग होती है। ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव्स हमने डिस्कस, इसमें हमने कहा जी प्रॉफिट शेयरिंग होती है। ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव्स हैं, इसमें हमने कहा कि जी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस होती हैं, वेयर दे हैव राइट टू हैव देयर स्टॉक विद इन द कंपनी, और स्टॉक ओनरशिप, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स होते हैं, उसमें एक्चुअली वो परचेज कर लेते हैं और वो रखे जाते हैं ट्रस्ट अकाउंट्स में। और फाइनल हमने डिस्कस किया एग्जेक्टिव कंपनसेशन, उसकी कंपोनेंट्स क्या हैं और इसके ऊपर आर्गुमेंट्स क्या हैं, क्रिटिसिज्म क्या है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर 14. These are the references for lecture 14, Human Resource Management, Robert Mathis and John Jackson, and Fundamentals of Human Resource Management, Raymond No, John Hollenbeck, Barry Garrett, and Patrick Wright. So this was all about lecture 14. Now, thank you very much.